Good morning, friends, and welcome to the session. Start of a fresh week today. It's an expiry day, not a fresh week, Tuesday. So yesterday we did see that market gave a good move, held out throughout the day. And देखते हैं आज क्या है मार्केट में. आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है. या गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. So let me share my screen. Yeah. So before we start, I'll read out the disclaimer. So how was your day yesterday? कैसा रहा कल का दिन सबका? So we have participants. Yeah, good morning, Gunapal. So I'll read out the disclaimer. This is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. Was good. Yeah, yesterday clear range breakout tha. See, I think tomorrow or Thursday we'll release the Substack note in which now the topic which I'm going to cover is the opening 15 minutes range breakout in context of a strong gap up or a strong gap down which happened today. There are 4 to 5 patterns जो कि market में repeat कर रही है. So as a trader, you have to be aware of it. So I think today or tomorrow I'll spend full day in writing the Substack note. So हम अपना process follow करते. First we see the big headlines. Headlines बोल रही है Asia stocks extend losses at oil surge, stokes inflation worries, US. फिर से ग्लोबल हेडलाइंस बहुत कुछ जी. एक दिन पुल बैक, नेक्स्ट डे डिक्लाइन चलता रहेगा सर. कल हमने जो इवनिंग में देखा 6% का रेंज है, उसमें आप टॉप 3% पे ट्रेड कर रहे हो. वो टॉप 3% में मोर और लेस द स्विंग ऑन द अपसाइड इज डन. सो यूएस फ्यूचर्स अभी थोड़े नरम है, 186 पॉइंट्स डाउन. कल नैस्डैक पौने स्टॉक्स में फिर से एक बिकवाली का माहौल है. ओवरऑल सब रेडी दिख रहा है. तो इसमें होता क्या है, अगले दिन का मूव इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल सॉफ्टनेस टर्न्स आउट टू बी एन एग्जॉशन. एग्जॉशन मतलब जितना होना था कल हो गया. अभी देखते आज हो रहा है कि नहीं. विल हैव अ लेवल्स. So US futures is down. Lag in streaming. Okay, no, at my end to streaming ठीक दिखा रहा है. So let me just check. I'll just play it on my mobile also. So I'll come to know whether stream is okay or not. Yeah, just give me a minute. नहीं, stream तो मेरे यहाँ ठीक दिखा रहा है. Let me change. Little lag is there. I agree. I'm watching it on my mobile. There is a little lag. So more of the Asia. I'll just check indices futures check कर लेते हैं. देखिए ये मार्केट ऐसा है ना. कल क्या हुआ था भूल जाओ. What happened previous day, forget it. Every day is a fresh day and you have to plan accordingly. क्योंकि मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं. अगर ट्रेंड रहता तो प्रीवियस डेज मैटर्स अ लॉट. राइट नाउ देयर इज नो ट्रेंड. इट्स ऑल वोलेटिलिटी, स्पाइक्स, पुलबैक्स एंड डिक्लाइन. इसमें यू हैव टू ट्रीट ईच डे सेपरेटली एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? कल का देख के आज सौदा करोगे तो प्रॉब्ली इट विल नॉट गोइंग टू वर्क. जय श्री कृष्णा, जय हिंद इन्वेस्टमेंट्स. सो पूरा यूरोप भी नेगेटिव है, कट के साथ है. मुझे एशिया देखना. या बोवेस्पा ब्राजील जो कि मेटल इंडेक्स इज डाउन. मोर मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स आर मेटल. निकाई भी डाउन है. तो ग्लोबल माहौल कुछ एनकरेजिंग नहीं है. सो वी डोंट हैव अ ग्लोबल दिस थिंग विच इज एनकरेजिंग. तो ये देख के लगता गिफ्ट निफ्टी मोर और लेस अभी थोड़ा माइनस ही रहेगा. So when I say one strike, which is plus or minus 50 point, my pick is minus 50 point. देखते जाकर. See, I don't watch Gift Nifty that way. First, पहले आप ध्यान बैठाओ कि क्या हो सकता था. So अगर मैं फ्यूचर्स में जाता हूँ, if I go to Gift Nifty, this is Gift Nifty आज डाउन है. Yes.
So गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग विद अ कट ऑफ 168 पॉइंट्स. तो ये जो माहौल चल रहा है ना, इस पे आपको जीना पड़ेगा. रोज का रोज देख के काम करो, प्रीवियस डे स्विंग से डायरेक्शन मत लाओ, बिकॉज देखिए ग्लोबल सिनारियो डेली बेसिस ओवरनाइट चेंज हो जाते हैं. कल जो बीटीएसटी करके गया, इट्स ओवर फॉर देम. अभी एक चीज आप ध्यान दो, गिफ्ट निफ्टी में मैचिंग हाई बन गया यहाँ पे. एक बार आपको पता, मैचिंग हाई हम फॉलो करते, एक बार मैचिंग हाई बन गया तो जब तक ये लेवल नहीं निकलता हम तेजी में नहीं आ सकते. एवरीबडी अग्रीइंग इट. देयर इज अ वेरी वेरी रेलेवेंस ऑफ मैचिंग हाई. बहुत बार अपने निफ्टी में नहीं बनता, बट गिफ्ट निफ्टी में बन जाता. दैट्स व्हाई आई वॉच गिफ्ट निफ्टी, which is 24,292. आफ्टर दिस लेट्स गो एंड चेक क्रूड. क्रूड बॉटम पे था, हम लोग 78 79 एक्सपेक्ट कर रहे थे, देख रहे या मोर और लेस इट्स कम. सो हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दिस? वी हैव बीन फॉलोइंग इट फॉर द लॉन्ग टाइम कि जो सपोर्ट तोड़ा वापस से क्रूड वहां तक आना. सो क्रूड का 78 का मूव तो हो गया. डू यू ऑल रिमेंबर? एनीबडी हु स्टिल डज नॉट रिमेंबर? दिस इज व्हाट वी हैड एक्सपेक्टेड इन क्रूड. आ गया क्रूड. नाउ देखिए, आपको रूल ऑफ इक्वालिटी और स्विंग एक्सटेंशन या ट्रेंड एक्सटेंशन फॉलो करना है. क्रूड में यहाँ पे गैप है, देयर इज अ गैप इन क्रूड ओवर हियर एंड वी फॉलो द सेम थिंग. द कैंडल बिफोर द गैप इज द रेजिस्टेंस. सो क्रूड में और थोड़ा 82 83 डॉलर का उछाल है. अगर हम रूल ऑफ इक्वालिटी देखते हैं क्रूड में, सो इफ आई टेक दिस स्विंग अप एंड एड द सेम टू दिस लो, मोर और लेस रूल ऑफ इक्वालिटी में इक्वल मूव हो गया. ए इक्वल्स टू सी हो गया. इसको एबीसी पैटर्न बोलते हैं. आई विल राइट इट डाउन फॉर यू. नो, आई डोंट हैव दैट मच टाइम. राइट. सो क्रूड ऑन एक्सपेक्टेड लाइन इट्स गोइंग अप. आफ्टर दैट विक्स देखते. या डिटेलिंग विल डू इन द इवनिंग. राइट नाउ वी आर प्लानिंग फॉर द ट्रेड. See, VIX में what we saw yesterday was a big spike on the downside. कल विक्स और निफ्टी दोनों बढ़ा, तो इसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं. अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो विक्स को नीचे आना है. तो प्रोबेबली टुडे दैट मूव विल प्ले आउट. सो लोअर एंड ऑफ द बॉटम पे देखिए वॉलेटिलिटी, जैसे हमने बोला ना 10 के आसपास जाएगी. इट्स अ वेरी लो वॉलेटाइल रिजीम. सो विक्स मोर और लेस कुछ इंडिकेशन नहीं दे रहा. विक्स इन दिस रेंज सजेस्ट मार्केट में volatile swings intact है, because ये range में sometimes VIX will be upper end of the band, sometimes lower end of the band. That is going to create the volatility intraday, overnight and intra week. After seeing this, now only we go to Nifty. So this is my Nifty. This I explained yesterday. Focus area should be 3%. So those who have not, please watch yesterday evening's recording. So now this is Nifty. निफ्टी ने भी मैचिंग हाई बनाया ओवर हियर, दिस हाई, like gift nifty. So simple, I go now to my 60 minutes time frame. Market is showing a gap down opening. So in this 60 minutes time frame, अभी भी ये रेजिस्टेंस निकला नहीं है. देखिए यहाँ पे गैप है. I told you please focus on gap. Yesterday gap तक आया, so this is the resistance. If it takes out this, जो कि आज लग रहा माहौल थोड़ा नरम रहेगा ओपनिंग में, then you have a gap over here. ये दो लेवल मेरे अपसाइड के हैं on a 60 minutes time frame. But as a day trader, you need to go to your 15 minutes. If I go to my 15 minutes, इसको पिवट बोलते हैं. ज़्यादा रेलेवेंस नहीं देता हूँ मैं. अगर नॉन स्टॉप तेजी है तो पिवट हैज अ रोल टू प्ले, अदरवाइज दे गेट टेकन आउट स्ट्रेट एट द ओपन, सो रिमूव इट. Yesterday's basing was somewhere here. So this basing is my first support. अगर निकल गया तो फिर कल का लोअर. That's it. Got it everybody? Nifty on a 15 minutes time frame. And never ignore a trend channel, जो कि मैं I have been repeating continuously. If I connect both the lines, you can clearly see a trend channel now. So don't ignore this. So this is how a Nifty is positioned. Now let's check the open interest position. I'll go to पहले options में let's go and check the spot where the maximum OI buildup is.
because today is an expiry. That data is very, very relevant. So maximum open interest build up in call is somewhere around 24,500. 24, which is way up here. लग नहीं रहा उतना ऊपर जा सकता, but markets are markets. You track the open interest live. And then you have the open interest which is at 24,300 में 95 लाख से और ऊपर 2.25 करोड़ है. देखिए पुट में 24,000 पे मैक्सिमम हुआ है, तो 200 पॉइंट का कट तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, which means the support is 200 points below. There is no open interest which is sizable, which is above 2,400. So more or less data match कर रहा. Do you all agree? Yes or no, friends? Okay. Now let's go and check open market-wide open interest positions. I'll go to OI statistics. In OI statistics, देखिए call और put दोनों बराबर है. So bulls and bears are like in a जुगलबंदी sort of a thing. So call is 1.40 crores, put is 1.36 crores. तो किसी का बोल सकते नहीं है, पलड़ा भारी है. So market after a gap down, possibly there might be a ranging move. That's what the open interest is showing. And then in the trending OI, आपको check करना सी. Yesterday everybody this was trending OI. Sorry, we check Bank Nifty. I'm so sorry. I'll just go back 1 second. No. Put writers are strong. So gap down में let's see if market is holding the level of 24,000 because 24,000 पे put में 1.98 2 करोड़ का open interest है. So 24 somewhere here. Got it? So that's going to be your support for the day. So that's Nifty. Plus you have to use this trending OI, friends, as market progresses. Right? Go to trending OI. See yesterday what happened. There was a crossover in call and put at 948, and the crossover remained throughout the day. So that's why market rallied. So today you follow the trending OI, plus in the option chart you pick up the strike price and keep checking, which is 100 points above the current price, whatever price it opens, and 24,000. So this should be in front of your screen. If 24,000 strike price right now, you can see a call writing is put writing is 1.98 crores and call is 32.6 crores. Abhi bhi put writers heavy hai. So till this crossover does not come today, breaking 24 looks tough. If the crossover comes, then possibly you might see a 50 odd points dip. So आज का जो important strike price है आपके लिए वो है 24,000. If everybody copies, give me a yes. यहाँ पे आपको crossover देखना है. After this, let's go to Bank Nifty. Only Jahid Investment says yes. This is Bank Nifty. देखिए Bank Nifty में भी range तो intact है, what we saw yesterday. There is a matching high, and Bank Nifty is will go straight to 60 minutes. Yeah. So Bank Nifty again twice ये high आया, and this low was a lower high. So once you have a lower high, we stop at the this is the gap and this area is there where we have multiple twice market has tested that level. So this I am going to consider the resistance. Next I'll go to 15 minutes. Then you are way up here जहाँ से भाव गिरा था. So these two are clearly defined resistance on Bank Nifty. Because gap के पहले का resistance I pay more weightage to, and the support side these are all pivot levels, which means morning if it dips down you do see that 100 points pullback or a bounce, and then you have way down which is here on a these are like what we call stack support. Stack support means one below the other, so generally it has some relevance, which means it's showing strength. So बैंक निफ्टी में आज देखिए 57,700 पे ध्यान रखो. मॉर्निंग में देखिए मार्केट खुलता है ना, तो द फर्स्ट डिक्लाइन इज एन एग्जॉस्टिव, यू गेट अ इमीडिएट पुल बैक. So those pullback comes from these levels, and after that then you have the origin of the last move which was here 57,600 जो कि कल का लो है. right? More or less ये जोन पे आप अपना strategize करो आज. Plus keep one thing in mind is that
Let me see if we can mark a channel in Bank Nifty or it's looking like a wedge. अगर ये मैं पूरा ले लेता हूँ, if I take this full, yes, the channel is there. Yes. So channel के lower end पे support is good. I don't know whether this support will hold throughout the day or will be just be an exhaustion, which means fine if things are showing gap down, then it can gap down over there and give you that 50, 80, 100 point spikes, which as a day trader you keep on looking at. After that, you have to then work hard for your trades. All I can point out the levels, the sentiments, the broader setups, and more or less, I think it's likely to respect today. So my take is today on Bank Nifty. अगर यहाँ पे खुला 300-400 पॉइंट नीचे, सो एग्जॉशन रहेगा गैप डाउन में. धीरज has a question, sir. One request to carry out special YouTube session for investing, not trading, covering fundamental analysis. Definitely, I'll pass on the message and we'll try to do this. So this is how Bank Nifty is looking like that. My first concern is this is going to be the immediate range today. After that, let's see whether ये focus में आएगा कि नहीं आएगा. That's the all I want to see today. Got it? So see in the morning, मैं तो कोई expert हूँ नहीं. I can just decide with a normal movement till 10, 11 or post open. After that, as a trader, you have to use your own brain because the trades are all yours, not mine. Okay. फिर कैसे लेवल्स पे शुड आई यूज अ मोमेंटम इंडिकेटर, शुड आई यूज अ वीवैप, एंड देन यू टेक योर डे फॉरवर्ड. सो गैप डाउन के बाद देखते हैं विल इट क्रिएट अ रेंज एंड ब्रेक द हाई और विल इट क्रिएट द ओपनिंग 15 minutes range and break the low. So both for Nifty and Bank Nifty today, your 15 minutes ORB is very important. Got it? If anybody wants to have more details, you can visit the trading Titan Substack. I have written, I'll just give you the link. Because देखिए यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें, small things you have to keep in mind given the market volatility spikes. So this I have written about it. Intraday trading, simple guide to in the tips and tricks session. Let me just take you there. Yeah, over here. Please make sure spare some time and read all. I would suggest you read all, but if you don't have time, want to rush in the morning hour, then you have to read this. Mastering Opening Range Breakouts, ORBs, opening 15 minutes, both on the gap up and gap down. So please don't leave the sessions or shut down after some time. Make sure before market open, go through it. It will not take you more than 5 minutes. Yesterday, this played out, right? Either on the upside or on the downside, and then I have a 5 minutes video on that. So that's all from my side, friends. Thanks, have a nice day. I don't want to exceed the time, but somehow I have again exceeded today. So levels are defined and plan accordingly. Thanks. We'll again meet in the evening at 3:45 and see how our levels work. VWAP को ध्यान में रखो. So 24,000 नीचे में आज deciding है for Nifty. If it gaps down over there, that could be the opening exhaustion. After that, let's see how things pans out. ORB will be in focus today. So make sure you go through it. Okay. So thanks. Have a nice day, everybody.